Morning everyone, warm welcome to your own channel. We call it as Exam Norm. And आज का सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लग रहा है आज इस सेशन के कंप्लीट होने से पहले we all will become a family of 10,000 subscribers on the YouTube platform. So obviously congratulations everyone. It's all because of you and it's your own channel. You know this very well. So moving ahead, welcome you all in the next session of Finance Now, which is a finance current affairs session, which is live Tuesday, Thursday, Saturday at 5 p.m. And in today's session, we will be discussing the most important news from the financial world from 17th to 19th of April. Surprisingly, fortunately or unfortunately, जो भी आप कहना चाहें, इन पिछले 3-4 दिनों में कोई important RBI circular नहीं है, which we have to discuss today. So आज की जो न्यूज है they are more related to SEBI. तो आज का जो हम सेशन है we can call it as SEBI session. Along with that we have some other important information or some other important news as well. सबसे पहली न्यूज काफी ज्यादा important है. I would request everyone be with me. Let's try to understand each and every point in much detail. ठीक है जी. Before I start with the discussion, I just need format and after that we will be moving ahead and we will be discussing many more important news in this today's session. Circular का revision Sunday को होगा as I promised. Last Sunday नहीं हो पाया था. You all know that because of the notification and then planning and then many more things, है ना. लेकिन इस Sunday या till your examination Sunday को आपका ये session होगा. As I have promised, you will get it. Don't worry. ठीक है जी. Start करें. Shall we begin? Okay, here we go with the first question from the previous session. The question is related to the voluntary retention route. Consider the following statements with respect to voluntary retention route and special rupee Vostro account. I hope you all know that what is special rupee Vostro account. So these are the Vostro accounts which are opened up for internationalization of rupee, which are opened up for the I would say settlement of the foreign trade in INR, and the funds which are lying idle in these accounts can be utilized, which can be invested in government securities, which can be invested in the debt instruments in the country. So under the VRR, foreign portfolio investment must invest at least 75% of their committed portfolio size within 3 months. That is correct. Investment under the VRR are exempted from the minimum maturity and issue wise limits. That is correct. कोई limit नहीं है, कोई maturity requirement नहीं है, nothing. Under fully accessible route, investment are subject to macro prudential limits but not to the investment limits. Macro prudential limits but not to the investment limits. Is this point correct? Is this point correct, guys? अगर हम इस point की बात करें तो सर ये point incorrect है. In the fully accessible route, investments are free from investment limits as well as macro prudential limits. दोनों ही free है. Under the SRVA route, short term investment limit applicable under the general route do not apply. तो जो limit है general route में, that is minimum maturity should be greater than 1 year. It do not apply on the special Vostro accounts. That is correct. Non-resident Indians investing in debt instruments, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई. So answer to this particular question is 1, 2, 4. A option is the correct answer. Is it clear, guys? Is it clear? Chalo, let's get started with today's news. The first news of the evening is very important. And I will be discussing many important finance related concept with respect to news. क्योंकि वो news important नहीं है, उस news से question नहीं बनेगा, लेकिन उस news में जो concept I would say refer किए गए हैं, जिन concepts में बात की गई है, they are really very important. ठीक है जी. तो कुछ 2-4 concepts हैं, we'll quickly discuss and then we will be discussing the news. Please pay attention. I hope you guys are ready. Here we go with the first point, guys. The first point is, I would like to discuss with you the first point, that is known as double taxation. I would like to discuss with you double tax or double taxation. Double taxation का मतलब कि एक बड़ा simple सा example लेते हैं. Simple सा example ये है कि sir, let's say we have a company named Infosys and Infosys is operating in US. Infosys is operating in US. तो Infosys ने जो भी revenue कमाया US में, on that revenue Infosys will pay the tax. We call it as corporate tax. और corporate tax pay करने के बाद whatever amount which is left with Infosys, that will be known as what? So that will be known as Infosys net profit. Now what will Infosys do? Sir, Infosys will transfer that net profit back to its native land, back to its headquarter, that is in India. Back to its headquarter in India. The moment this net profit enters India, it will be entered in the books of Infosys, and again
it will become the part of revenue or it will become the part of taxable income of Infosys. तो इसका मतलब अगर आपने जो रेवेन्यू यूएस में कमाया था, you have paid the tax on that revenue in US. Now you will be paying the tax on the same revenue in India as well. On the same revenue in India as well. Sir, is it justified? I would say yes, it is justified. Why it is justified? The reason is, what is tax? So tax is basically certain part of your income which you pay to the government, or some extra amount over your expenditure which you pay to the government against what? Sir, against government services. So whatever tax you have paid in US, you have paid because of the services given by the US government, and now the tax which you will be paying in India, that is because of the services which are given by the Indian government. So twice tax is justified in this manner. Twice of tax is justified in this manner. But on the other side, there is a problem. What is the problem? So the problem is, if I am an investor, I would think twice before I invest in Infosys कि भैया पहले मैं Infosys का एक यूनिट यूएस में सेटअप करूं, फिर उसके बाद I pay tax in US, then I pay tax in India as well. What will I earn? I will earn pretty less amount. So this arrangement basically hampers what? So this arrangement basically hampers the investment. It basically hampers the flow of income. It basically hampers the flow of funds. तो इन सारी चीजों को देखते हुए the countries they came together, and the moment the countries they came together, they signed agreements. We call it as double taxation avoidance agreement. What is this double taxation avoidance agreement? So this agreement basically means that on single income, two taxes will not be charged by two different governments depending upon the tie-up. For example, India has tied up with a nation N, and under this tie-up it is written that if an Indian company is investing in that particular nation, that nation will not tax charge, only and only the tax will be charged by the Indian government. Or maybe the tax will be charged by only N, not by the Indian government, or they both will charge tax simultaneously, but the equivalent tax percentage will be equivalent to one of the tax rate in the country. तो ये है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. ठीक है. अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इफ आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के केस में क्या है सर? इंडिया हैज साइंड this double taxation avoidance agreement with many countries. The basic and the most important example is Mauritius. So India has signed the double taxation avoidance agreement with Mauritius, which means if a company which is investing in India, if that company which is investing in India, it is based in Mauritius, so whatever income it will be earning in India, on that particular income no tax will be charged. On that particular income, no tax will be charged, and this agreement is known as double taxation avoidance agreement. And guys, that is the reason Singapore, Mauritius, these are so small nations on the global map or on the world map, but they are one of the largest investors in the country like India and other developing nations. The reason is, so these are tax havens, and they have signed beneficial agreements with different countries, and they have an agreement with India as well. We call it as double taxation avoidance agreement. ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है. इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एप्पल. वी ऑल नो दैट. नाउ एप्पल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन इंडिया वेयर नो double tax avoidance agreement is signed, and in that particular case tax will be charged on the company in India as well as the tax will be charged the moment they will enter back US. So there is a problem. So in order to avoid this problem, what US do? So US company will first set up its company in Mauritius, and with the name of the new company they will be making the investment in India. With the name of the new company they will be making investment in India, and this type of investment is known as double, or we even call it as, we have different types of investment treaties. Once we call this as tripping. So we have double tripping, we have single tripping, we have round tripping. So this is basically known as what? So this is known as triple tripping, in which three countries are involved. US first invest in Mauritius, and from Mauritius investment is done in India in order to avoid double taxation. ठीक है, in order to avoid double taxation. अब जब इंडिया को ये समझ आया कि भैया हमारी कहते हैं ना शराफत का बुरा फायदा लिया जा रहा है, तो इंडिया ने क्या किया? एक रूल बनाया. India came up with the rule in 2017. We call it as General Anti-Avoidance Rule.
This general anti-avoidance rule is responsible to check all the types of investment which is coming from different nations, all the inflow of income which is coming from different nations, as well as GAAR is responsible to check how the tax is calculated on the foreign company's income depending upon its origin country or depending upon its country of origin. So in that case, GAAR is responsible to identify if there is any situation of tripping. If there is any situation of tripping, we also call it as troppling. That is not important. So wherever there is any situation of tripping, wherever there is any situation of avoiding the tax intentionally, in that particular case, GAAR comes in the picture and GAAR asks the company that you cannot take up your funds without paying the tax. You have to pay the tax in the nation. ठीक है जी. अब recently there was a case with Supreme Court which said that GAAR was set up on 1st of April 2017, and it says that all the agreements, all the investments which have done before 1st of April 2017 will not be included under GAAR. अब भले वो गलत है तो भी GAAR कुछ नहीं कर सकता, but all the investments post 1st April will be included under GAAR. But if the investment which was done before 2017 but it has been revised, उस investment में कुछ changes किए गए हैं, if there are any changes done in the agreement, in the investment, then that will fall under GAAR even if the original investment was done before 1st of April 2017. ठीक है जी. तो अगली बार अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछे व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कोई आपसे पूछे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कब आया, तो क्या आप ये सारे पॉइंट्स आंसर कर पाएंगे? से यस और नो. विल यू बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल दीज पॉइंट्स? से यस और नो. से यस और नो. अभी मैं न्यूज पढ़ाऊंगा. द मोमेंट वील रीड द न्यूज एवरीथिंग विल फिट इन योर माइंड. तो इधर उधर जाने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो. जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा, उसको मैं रिलेट करूंगा विद द कंपनीज नेम एंड व्हाट नॉट. बट अभी के लिए द लॉजिक व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट क्लियर? मजा आया? बहुत बढ़िया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है सर? अगला पॉइंट ये कहता है कि ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसके साथ साथ वी हैव वन मोर टर्म दैट इज नोन एज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट. वी ऑल्सो हैव अ टर्म दैट इज नोन एज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट. टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट. अब अगर मुझसे कोई पूछे कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, it is basically a proof which gives that कि company is registered in US. For example, if a company is registered in US but it is controlled from if the country is registered in Mauritius but it is controlled from US, in that particular case what will happen? Sir, in that particular case this treaty will be denied even if you have a tax resident certificate कि ये कंपनी मॉरिशियस की है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इसे कंट्रोल यूएसए किया जा रहा है then we will not give you the benefit of double taxation avoidance agreement. ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? yes. We have this type of agreement with Singapore, we have this type of agreement with Mauritius, India have this agreement with around 80 plus nations. India have this agreement with 80 plus nations where we have signed the double taxation avoidance agreement. Now somebody is asking me, sir, what is the difference between double taxation avoidance agreement as well as FTA, that is foreign trade agreement? It is very different. समझो, foreign trade में क्या है? UK से कोई product, there is a product which is being imported from UK. On the entry, custom duty will not be charged. On the entry, custom duty will not be charged. A good which is exported from India, when it will be entering UK, no custom duty in UK will be charged. So it will be a free trade agreement. That means there is a free movement of goods and services between these nations. Here I'm not talking about the goods and services. Here I'm talking about investment. If the investment is done by a company, the income they are earning in the country on which the tax is to be paid, that tax will be paid in India or not. How the tax will be paid, it depends on the double taxation avoidance agreement which is signed. क्योंकि अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी काम कर रही है तो पहले टैक्स इंडिया में देगी, फिर वो टैक्स अपनी ओरिजिन कंट्री में देगी, तो सेम इनकम पे दो बार टैक्स. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, द कंट्रीज दे कम टुगेदर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंटर कंट्री
trade, inter-country economic relations, they sign foreign trade agreements, or sorry, they sign double taxation avoidance agreement. That is how it is different. Is it clear? Is it clear everybody? Is it clear? I hope the point is clear. ठीक है, चलो अब इस न्यूज को पढ़ते हैं. अब न्यूज को पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी. Give me 5 minutes, the news will be done. So recently there was a news related to Supreme Court of India's ruling with respect to Tiger Global case. There is a company named Tiger Global has raised concern over the tax agreements on foreign investors, particularly regarding GAAR, tax or treaty benefits and indirect transfers. तो वो recent क्या था अग्रीमेंट या क्या इशू था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई नहीं पूछेगा. आरबीआई क्या पूछेगा? टाइगर ग्लोबल पे क्या हुआ? कुछ नहीं. आरबीआई पूछेगा अगर चाहेगा तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल विल अप्लाई on the income which is arising from investment after 1st April. If the investment is done before 1st April 2027 or before 1st April 2017, then no GAAR will be applicable on that particular income which is generated from the investment which was done before 1st of April 2017. ठीक, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सर however there is a difference between investment and arrangement. What it says, if the investment was done before 2017, it's good, you are protected. But if you have done some changes, some updates to the existing agreement, to the existing investment format, then it can be scrutinized under GAAR, because if you are doing any changes to the agreement after 1st of April 2017, even if the investment was done before, then also it will be included under GAAR. GAAR का काम क्या है सर? GAAR का काम है in order to check that whether these double taxation avoidance agreements which double taxation avoidance agreement benefits which are given to the investors, is it done in the appropriate manner or not? Is it done in the appropriate manner or not? Then we have a term that is TRC, which stands for tax residence certificate, which basically gives the assurity that the company through which the investment is done, it is belonging to the given company, for example, given country, for example, Mauritius only. But this is not enough. If you have TRC, this is not enough. In that particular case, GAAR will do the scrutiny, and if GAAR feels company तो Mauritius में setup है लेकिन उसे control US से किया जा रहा है, in that particular case, GAAR will ask Indian government not to provide double taxation benefit to the public. Is it clear? तो यहां से 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पहला GAAR, दूसरा टैक्स बेनिफिट एंड तीसरा टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट. अगर क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ना कि इस न्यूज पे टाइगर होल्डिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. Is it clear, guys? All these 3 concepts are clear. Give me yes, sir. What is GAAR? Sir, it is the provision in the India's tax framework designed to prevent aggressive tax avoidance by allowing authorities to deny tax benefit if an arrangement is structured mainly to avoid taxes. तो अगर आपने arrangement generally structureize ही किया है with the motive of avoiding tax, then you will not get the tax benefit as said. Second is, it refers to the tax advantage available between the nation where on a single income 2 taxes will not be charged by 2 different countries. Rather, they tie up an agreement where they charge single tax, then distribute between them, or only one government will charge the tax, other will avoid charging the tax on the investor. That is what I am trying to say. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया. अगली बार अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द पॉइंट्स. एक बार घर जाकर पीडीएफ को देख लीजिएगा. जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा. थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, डोंट वरी. मजा आया जी? एज ऑलवेज मजा आया. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अगली बार गार कोई पूछे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कोई पूछे तो वो डायग्राम जो मैंने बनाई थी वो डायग्राम बना के दिखा देना. कोई आपसे दोबारा इस पर क्वेश्चन नहीं करेगा. ठीक है, चलो let's start with the let's move on to the question. The question related to the same is, what does the question says? With reference to the recent ruling of the Supreme Court in the Tiger Global case, subsequent action by the Central Board of Direct Taxes, consider the following statement. The amendments to the Rule 10U and Rule 128, ये याद रखने की चीज है तो याद रख लेना. The amendment to Rule 10U and 128 clarify GAAR will not apply to income arising from investment made before 1st April 2017,
प्रोवाइडिंग ग्रैंडफादरिंग प्रोटेक्शन। ग्रैंडफादरिंग प्रोटेक्शन का मतलब ग्रैंडफादर मतलब पुरानी जनरेशन। तो उस केस में तो ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि जो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे यू स्टिल हैव द प्रोटेक्शन against the GAAR as per the given rules. Second is, the ruling establishes that grandfathering protection automatically extends to all subsequent exit transactions arising from pre-2017 investment. क्या ये पॉइंट करेक्ट है? क्या ये पॉइंट करेक्ट है? क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है? इज इट करेक्ट? नो सर, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि सर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस हुए then it will not be called as investment, it will be rather referred as arrangement. Whether you have invested in 2002 but now you have done the changes in 2019, so you will be included under the scrutiny of GAAR, so this is incorrect. Next point is, the Supreme Court indicated that tax residency certificate alone may not be sufficient to claim the treaty benefits. That is correct. We have to understand who is actually controlling the company. भले आपके पास TRC है Mauritius का, but you are controlled by US based company, then you won't get any benefit. Indirect transfer involving foreign entities deriving value from Indian assets are always exempted from double taxation avoidance agreement. Indirect transfers जो किए जाते हैं from the involving the foreign entities, they derive value from Indian assets. जो भी वो वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द इंडियन एसेट्स, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ट्रांसफर्स आर नॉट ऑटोमेटिकली एग्जम्प्टेड अंडर DTA, so this is incorrect. Moving on to the next point. So the next point says the ruling suggests a possible overlap between statutory GAAR provisions and judicial anti-avoidance principle. हाँ सर, दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी डन. दोनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी व्हाट? सो द आंसर इज डी ऑप्शन. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द लीगल बेस ऑफ दीज GAAR? RBI एग्जाम सेक्शन एंड एक्ट आस्क्ड. नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये पूछा जाए, लेकिन वो ये हो सकता है कि वो जैसे मैंने क्वेश्चन के रेफरेंस में दिया वैसे ही अगर रेफरेंस में दिया हो तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, यू वोंट फील कि कहीं ये गलत तो नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई बट यू आर फीलिंग कि कहीं आरबीआई ने सेक्शन या रूल्स तो गलत नहीं लिख दिए, तो इसलिए मैंने रेफरेंस दे दी. एक बार बस याद कर लेना. दैट इज इट. होस्ट कंट्री कैन बी आइडेंटिफाइड विद LEI. ना, होस्ट कंट्री विल बी आइडेंटिफाइड. दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ taxation residence certificate as well. But the point is controlling. Who is controlling that particular company? That is more important. Controlling पे बात हो रही है ना. It's not about where the company is set up. It's about from where the company is controlled. If it is not controlled from the nation to which we are giving the benefit, then it won't be included in this category. Fourth point क्या कहता है? Fourth point ये कहता है, ध्यान से सुनना. Ayushi Raj, sorry. Indirect transfer involving foreign entities deriving value from Indian asset. For example, India की एक asset है which is owned by foreign investor. अब उस asset पे कोई profit आया, उस profit को आपने कहीं invest किया, उस investment से जो profit आया that is indirect. That is indirect income, and that indirect income, if it is transferred to the foreign investor, that will be tax free? No sir. It will not be always tax free. It will depend. It will depend that whether it is exempted under double taxation avoidance agreement or not. हर बार वो exempted होगा, that is not sure, or that is not always true. Is it clear? Is it clear, Ayushi? Your question is clear? Chalo, let's move on to the next question, I guess. The next question we have is Reserve Bank of India's non-banking financial company branch authorization direction 2025. We have not done this now. I hope we have not done this. The NBFCs, they can open up the branches. There are certain conditions which NBFCs have to fulfill in order to open up the branches. I guess this news was not done in the previous session, or was it done? I'm not sure. Just let me know in the comment section. It is applicable to foreign investments only, na? It is applicable to foreign investments only, ना. Through expense उसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से सुने, थ्रू एक्सपेंस का क्वेश्चन सुनो यार एक बार. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं.
True expense, the things are going to happen in this manner. Please pay attention. मान लो एक इंडियन इन्वेस्टर है who has invested in महाराष्ट्र. अभी एक न्यूज आई कि हिमाचल प्रदेश is giving a special economic zone where the pharmaceutical companies they will be enjoying tax benefits, especially the excise duty which is charged by the state government or the other taxes which are charged by the state government, they are exempted. तो यहां से किसी ने अपनी फैक्ट्री को डिसलोकेट किया या फिर ये कहो कि यहां से रैप अप करके उन्होंने अपनी फैक्ट्री को हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया विद द सोल मोटिव ऑफ एंजॉयिंग द टैक्स बेनिफिट. इट इज गुड, but it will not come under the category of tripping or toppling. It has nothing to do with that because it is internal movement. Now, if a foreign company, in this case, whether you are earning profit in Maharashtra or you are earning profit in Himachal Pradesh, you will be paying a single tax only, na? तो जब आप सिंगल टैक्स पे कर रहे हैं तो उसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ज्यूरिडिक्शन ही एक है. बट लेट्स सपोज एन इंडियन कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, लेकिन उन्हें पता है कि अगर इंडिया में मैंने कंपनी बनाई तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, तो क्यों ना पहले मैं अपनी एक कंपनी फ्लोट करूं मॉरिशियस में एंड देन आई विल बी सेटिंग अप अ कंपनी इन इंडिया representing that the investment is done from Mauritius. So this will enjoy zero tax in India because of the double taxation avoidance agreement. अब ये जो कंपनी है इसको चेक करेगा गार. अगर गार को समझ आ गया कि भैया इसका कंट्रोल तो इंडिया में ही है, तो उस केस में you won't enjoy the tax benefits. You have to pay the tax in India, then you have to pay the tax in Mauritius again. This type of tripping is known as round tripping or double tripping. Is it clear now? Is it clear? Is it clear? क्या नो सर मैं समझा नहीं. ट्रू एक्सपेंस का क्वेश्चन आंसर कर दिया मैंने, उसके बाद नहीं पता. द नॉर्मल टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स? किस पे नॉर्मल टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स जहां नहीं एप्लीकेबल होता वहां मैट आता है. ऐसा थोड़ी ना कि मैट या कॉर्पोरेट टैक्स में से एक चूज होगा. जहां कॉर्पोरेट टैक्स एलिजिबल नहीं है वहां मैट आता है. और कब एलिजिबल नहीं है? मान लो हम कहते हैं कंपनी के रेवेन्यू में से हमने माइनस किया कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें से निकला ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया ऑपरेशनल एक्सपेंस, हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स डेप्रीसिएशन. तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, डेप्रीसिएशन माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब मान लो अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जीरो निकल के आया, इफ इट इज जीरो then what will be corporate tax? It will be zero. But company cannot enjoy zero taxation as per the RBI norms. In that case, tax will be charged on the gross profit, but that will be MAT. So MAT जो है that is an alternative tax. It is not, I would say, a choice कि corporate या MAT. नहीं, corporate है तो पहले corporate, नहीं हो रहा तो फिर ऑप्शन होगी MAT की. ठीक है जी, क्लियर है, डन. नो मोर क्वेरीज, हो गया. अब इससे ज्यादा क्वेरी की जरूरत नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now the next news, as you say guys that we have not done it, let's quickly do this news. It's very easy, it's very doable. The news says that RBI has come up with the new rules and regulations with respect to NBFCs. New rules and regulations with respect to NBFCs. What are these rules and regulations we are talking about? What are the rules and regulations we are referring over here? So if I talk about these rules and regulations which I am referring over here is, so it is related to branch authorization, it is related to branch opening. So let's try to decode it as we always do. पहले मैं एक बार जल्दी से आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ. After that we can discuss one by one the entire discussion जो कि यहाँ पे मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ. ठीक है, चलो. Please pay attention. Now the first thing from where I will start my discussion is, the discussion starts from this point that if an NBFC, if we talk about an NBFC, we first classify the NBFCs into different categories. So let's first classify them, or let's first categorize them in different formats. So I will be keeping deposit taking NBFC here. Along with this, I will be keeping NBFC factor here. Along with NBFC factor here, I will be including microfinance institutes. I will be including IFSC, infrastructure finance companies, infrastructure debt fund companies. Then we have core investment company,
as well as housing finance companies. They all are included over here. But these directions, which I'm going to discuss, these directions, they are not applied. Do not applied on the list. The list is mortgage guarantee companies. It does not apply on standalone primary dealers. It does not apply on peer-to-peer lending NBFCs. It does not apply on NOFHC. इन पे ये अप्लाई नहीं होता. ठीक है, पहली चीज तो ये. अब इसमें ये डायरेक्शंस कहती क्या है वो इंपॉर्टेंट है. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, व्हाट they say that if an NBFC wants to open up, if an NBFC wants to open up a branch in India, they can open up a branch in India without prior approval from RBI, if they fulfill certain conditions. What are those conditions? The condition says, if you are a deposit taking NBFC, for a deposit taking NBFCs, they can open up the branches based on the conditions. The first condition is net owned fund of the company, if it is up to 50 crores. Net owned fund of the company, if it is up to 50 crores, net owned fund of the company is up to 50 crores, or the credit rating of the company is below AAA, then it can open branches or it can appoint agent within the state only. So in this case, they can open the branch or they can appoint the agent only within the state where they possess their headquarter. मतलब जिस स्टेट में उनका हेडक्वार्टर है उस स्टेट में वो अपना बिना किसी के रोक टोक के, बिना आरबीआई के अप्रूवल के आराम से अपनी ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं और किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर एक एनबीएफसी है जिसकी नेट ओन्ड फंड ग्रेटर देन 50 करोड़ है और उसके साथ साथ उसका जो क्रेडिट रेटिंग है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन AA, credit rating is also above AA, or it is AA or AA above, then in that particular case they can open the branch all over the country without prior approval of RBI. ठीक है. अगला पॉइंट आता है कि सर अगर कोई एनबीएफसी है और उस एनबीएफसी का जो नेट ओन्ड फंड है दैट इज ग्रेटर देन 50 करोड़, लेकिन उसका जो क्रेडिट रेटिंग है दैट इज बिलो AA, then in that particular case they can open up only and only in the state where they have the headquarter. पूरे स्टेट में कहीं भी you can open up the branch without prior approval. लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं then you cannot do it without approval received from RBI. The next is NBFC, they must give at least 3 months public notice before they close the branch. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Deposit taking NBFC must inform RBI within 7 days of publishing any kind of notice where they are trying to or they are ruling for closing of the branch. So these are some of the conditions which you need to remember. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. चलो अब इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं. इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाली है ध्यान देना. सबसे पहली चीज, एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट RBI has come up with 2 drafts. The draft says that is Reserve Bank of India non-banking financial company branch authorization direction branch authorization direction 2025. So they are into the force immediately as per the announcement. So they have been announced and they will be into the implementation immediately. अब अगर मैं immediate implementation की बात करूं, सबसे पहला है सर, these are applicable only on the NBFCs. What kind of NBFCs? As I have already discussed with you. जल्दी से पढ़ लेते हैं. सर, deposit taking NBFCs, factor, MFIs, IFSCs, IDF as well as CIC and housing finance company, but it is not applied on mortgage guarantee company, standalone primary dealers, peer-to-peer lending, account aggregator as well as NOFHC.
ठीक है जी. These the applicability is aligned with scale based regulation framework also. So the next point is the definition. So there are some of the definitions which are given, but वो normal definitions थी तो मैंने include नहीं की क्योंकि वो आपने पढ़ी हुई है as it is. अब opening of a branch, sir, opening of a branch and NBFC in general is allowed to open the branch without prior approval from RBI unless they are specifically restricted. तो अगर कोई NBFC है सर वो बिना RBI के अप्रूवल के ब्रांच खोल सकती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई रोक टोक नहीं है. लेकिन अगर एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो तभी ब्रांच ओपन करेगी अगर उसका नेट ओन फंड अप टू 50 करोड़ है या क्रेडिट रेटिंग बिलो AA है, दोनों में से कोई भी एक बिलो है, देन दे कैन open up the branch only in the state where they have their headquarter, where they have their registered office, where they have their registered office. अगर किसी स्टेट में उनका registered office नहीं है, there they cannot open the branch. If the net own fund is more than 50 crores and credit rating is AA or above, then they can open up the branch anywhere in India. If NBFC has NOF above 50 crores but rating is below AA, it can open branch only in the home state. Only in the होम स्टेट. ठीक है, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं जो मैंने गलत किया है, मैं आपको बताता हूं. एक है और एक है ये. ठीक है, मैं दोनों जगह हेडक्वार्टर लिखा है मैंने, मैं वो क्लियर कर देता हूं. सर हेडक्वार्टर मतलब होम स्टेट, जहां आपका हेडक्वार्टर है वहां आप ब्रांच ओपन कर सकते हैं व्हेन योर नेट ओन फंड इज ग्रेटर देन 50 करोड़ एंड योर रेटिंग इज बिलो AA. If your net own fund is greater than 50 crores and your rating is greater than AA, and your rating is greater than AA, then in that particular case you can open up the branch anywhere in the country. Now you can open up the branch only in the state where you have your registered office. अगर वहां registered office है तभी आप खोल पाएंगे जब आपका net own fund is below 50 crores, या तो ये बिलो 50 करोड़ हो या फिर आपकी रेटिंग हो बिलो AA. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस. कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? गिव मी अ थम्स अप. अब ओपनिंग ऑफ ब्रांच में एनबीएफसीज दे आर नॉट जनरली अलाउड टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया. हाउएवर एनबीएफसी सच एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, they had already opened the branches abroad and informed RBI earlier, then they can continue holding those branches. Nobody is going to stop you. You can continue holding those branches. Nobody is going to stop you. Nothing to worry. Next, we have closure of branches. If I talk about the closure of branches, then my answer would be, sir, NBFCs, they must give at least 3 months. If you are planning to close the branch, तो क्या करना होगा भैया? 3 महीने का नोटिस देना होगा. You will give a public notice of 3 months before closing the branch. तो वहां पे आप बहुत क्लियरली पब्लिश करेंगे इन द न्यूज़पेपर एज वेल एज इन द लोकल न्यूज़पेपर, इवन इन फ्रंट ऑफ द ब्रांच दैट वी आर गोइंग टू क्लोज इट आफ्टर 3 months, एंड यू विल बी इन्फॉर्मिंग NHB or RBI within 7 days of this notice. Opening of representative office abroad. This is very important. Prior approval of RBI is required if you are opening up representative office abroad outside India, and application must be applied to RBI through which portal? That is Pravah portal. अगर outside India जाना है Pravah portal पे apply करो तभी आपको approval मिलेगा, then only you can open up, otherwise you are not allowed. So these offices, they can only perform market research or similar activities, but they cannot undertake financial transaction or fund based activities because they are called as what? So they are called as representative office. They are just representing NBFCs, but they are not performing functions as that of NBFC. The parent company must regularly obtain report on activities of these offices. If no activities carried out or reports are received, the approval may be reviewed or withdrawn. तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनसे रिव्यू नहीं ले रहे, पूछ नहीं रहे भैया क्या कर रहे हो, क्या हालचाल है, कैसा है वेदर वहां पे, ऐसा तो नहीं कहीं वहां पे किसी को लोन देना शुरू कर दिया, अगर ऐसा है तो वापस आ जाओ. तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू टेक द रिपोर्ट. इफ यू आर नॉट टेकिंग, देन RBI will cancel the license. Then all the provisions and directions which were introduced earlier from 28th of April 2025, they have been taken away. However, the actions which have been already taken, कोई अगर एक्शन ले लिया पुराने लॉ के अकॉर्डिंग, it will stand still, but for the new actions, earlier laws will not be applicable. RBI may issue clarification to resolve any doubts if required. The amendment
has been done to the 2025 NBFC November announcement which was done। तो उसकी नवंबर अनाउंसमेंट में जहां क्लियरली बताया गया था कि कैसे एक ब्रांच ओपन होगी, उस हिसाब से यहां पे क्लैरिटी दी गई। ठीक है, क्लियर है सर? मैंने 2024 में एमए किया है तो तैयारी कर रहा हूं। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं आकाश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अभी तक तैयारी कर रहा हूं, क्या इसको GAO ईयर माना जाता है? मतलब सर अब्रॉड NBFC मस्ट बी रेगुलेटेड बाय कंट्रीज रेगुलेटर, व्हाई RBI रेगुलेटेड? दैट इज द रीजन ना, RBI अलाउ ही नहीं कर रहा कि बाहर जाके काम करो। उसका रीजन ये है कि अगर बाहर जाके कुछ गलत हुआ, उसका जो इम्पैक्ट है दैट विल कम ऑन दी हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर पे इम्पैक्ट आया दैट विल इम्पैक्ट द एंटायर Indian economy. So RBI saying not allowed. If you want to go, you can just go as a representative office where you cannot perform the operations. There you will be just doing the research work, you will be just collecting the data, nothing else. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। Moving on to the third news of the day. The next news talks about social stock exchange for issuance of zero coupon, zero principal instrument. I hope you must have heard about social stock exchange. अगर मुझसे कोई पूछे what is social stock exchange, sir, it is a stock exchange where the NGOs, the non-profitable organizations, they can raise funds from the public for social purposes. Now this funding is raised not against any kind of shareholding, not against any kind of motive of earning returns in the near future. Rather here the funding is done, the investment is done with the motive of social cause. So SEBI has introduced reforms in the social stock exchange framework to enhance fundraising flexibility as well as encourage the participation of non-profit organizations. तो वो क्या रिफॉर्म्स है, बस उन्हीं रिफॉर्म्स में 2 मिनट बात करनी है, कहानी खत्म हो जाएगी। The circular issued by Security and Exchange Board of India relates to the reform in social stock exchange framework, specially aimed at improving participation of not-for-profit organization and making fundraising more flexible and practical. Making fundraising more practical and flexible. So अगर हम बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, ये क्या है सर? इट इज अ प्लेटफॉर्म which was set up by SEBI, which allows the social enterprises, especially the non-profit organizations, to raise funds from the public in a transparent and regulated manner. Basically, to strengthen this ecosystem, SEBI reviewed existing provisions in consultation with सोशल स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजरी कमेटी। तो अगर कोई पूछे ये डिसीजन किसके थ्रू लिए गए, सो दिस डिसीजन आर टेकन बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजरी कमेटी। माय क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजरी कमेटी? You will be giving me this answer in the comment section after the class is over. Moving on to the next point, SEBI ने क्या किया? ध्यान से सुनना। पहला चेंज, SEBI has extended the period for which NPO can remain registered on SSE without raising funds. Earlier an NPO had to raise funds within 2 years of registration. तो पहले क्या था कि अगर आज आपने रजिस्टर किया on the social stock exchange, then you have to do what? Then you have to raise the funds within 2 years. If you are not able to do that, then you won't be allowed to remain registered. तो SEBI ने कहा यार ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो सोशल कॉज है, ये तो कहते हैं ना समाज विकास का काम है या फिर श्रद्धा का काम है, जो भी जैसा भी आप देखना चाहो, उसमें कोई करे या ना करे इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, जो फंड रेजर है वो क्या कर सकता है, तो इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं। दे हैव गिवन 1 additional year, that means now you have 3 years after registration and within those 3 years you have to raise the fund, otherwise you won't be allowed to remain over there, you won't be allowed to be registered over the social stock exchange. पहला चेंज, तो पहला चेंज क्या कहता है? एनपीओ ने रजिस्टर किया, विद इन 3 years फंड रेजिंग होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम है। there have been relaxation in the minimum subscription requirement. What is zero coupon? Zero coupon का मतलब क्या होता है सर? Zero coupon basically means a financial instrument, or to be very precise, a debt instrument which is purchased on zero rate of interest, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूंगा? नहीं सर, इन दिस केस
not in this case which I'm telling you, but in general मैं ये जो बात बता रहा हूँ, I'm telling you this thing for zero coupon bonds, not for zero coupon, zero principal bonds, only for zero coupon bonds you enjoy discount. Discount का मतलब ये 10,000 का bond है with face value of 10,000. You are purchasing it for 1 year, you will purchase it for 9,000. और एक साल के बाद आप redeem कराओगे, you will pay back, you will return this instrument to the issuer, you will receive 10,000. तो टेक्निकली 9,000 इन्वेस्ट किए, 10,000 मिल गए, तो 1,000 जो रिटर्न मिला वो एक तरह से इंटरेस्ट ही तो है which you have received on your 9,000 rupees of investment. बट यहाँ पे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल का क्या मतलब है? जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल का क्या मतलब है? अगर कोई मुझे इसका आंसर बताना चाहे तो, अगर मुझे कोई इसका आंसर बताना चाहे, then the answer is zero coupon, zero principal एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है which is issued by not for profit organization to raise funds, especially for social developments projects such as we have different social development projects which are going on in the country. Unlike traditional bonds, they do not have any monetary return to the funder. Instead, the value lies in the social impact created by the project. So zero coupon means there will be no interest. Zero principal means the initial amount invested is not repaid at maturity. Effectively, the principal amount is going in donation rather than in loan. So that is the reason we call it as zero coupon, zero principal bonds. तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, that will depend on the size of the project, but that amount cannot be redeemed. जहाँ पे जैसे ये 10,000 फेस वैल्यू थी, 9,000 आज दिया तो 10,000 रिडीम होगा. यहाँ पे फेस वैल्यू तो कुछ ऐसा सच होगी नहीं, बट जो भी आप पे करेंगे इसके अगेंस्ट यू कैन नॉट रिडीम. व्हाटएवर यू आर पेइंग, योर पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है, चेंज क्या हुआ है, जिसकी पूरी स्टोरी है. वो स्टोरी ये है सर, प्रीवियसली एटलीस्ट 75% ऑफ द प्रपोज्ड हैज टू बी सब्सक्राइब्ड फॉर द इशू टू बी सक्सेसफुल. मतलब अगर आज आपने इशू किया, इफ यू आर इशूइंग टुडे, फॉर एग्जांपल यू आर इशूइंग ऑफ 100 crores, then you must raise the funds at least 75 crores to call that issue as a successful issue. But now the threshold is reduced to 50%. कि 100 crore मांगा, 50 crore मिल गया, कोई बात नहीं, we will consider it as a successful issue. So specifically the social stock exchange, it must conduct due diligence and ensure that even with 50% funding the project remains viable and meaningful. बस ये देख लेना कि 100 करोड़ मांगा था, 50 करोड़ मिला, क्या 50 करोड़ में प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट चल जाएगा तो चला दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेबी ने क्लैरिफाई कर दिया, एनपीओ इन केसेस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इफ द सब्सक्रिप्शन फॉल्स बिटवीन 50 to 75, the NPO must clearly disclose how it going to plan it. उन्हें बताना होगा कि कैसे आप प्लान करेंगे. 75 आ जाता तो चल जाता काम, लेकिन अब 75 से कम आया, लेकिन 50 से ज्यादा, काम तो चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा उसका पूरा प्लान आपको बताना होगा. सो इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ईदर 50 और 75, it may depend on the case whether not achieved, the funds must be refunded. तो अगर ऐसा हुआ कि आपने 75% का मिनिमम रखा, सेबी ने कहा 50 आएगा तो भी अलाउड है, 50 आने के बाद आपको लगा प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा, वापस कर दो पैसे, 60 आया तो भी नहीं चल पाएगा, वापस कर दो, 74 आया तो भी नहीं चल पाएगा, वापस कर दो. और अगर आपको लग रहा है चल पाएगा तो एक प्लान दे दो, प्लान सबने एक्सेप्ट किया, सेबी ने एक्सेप्ट किया, तो उसे इंप्लीमेंट कर लो, देन यू कैन इंप्लीमेंट इट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इज इट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप. सो दीज चेंजेस आर बेसिकली डन अंडर द अमेंडमेंट्स टू द मास्टर सर्कुलर which is dated 19 जनवरी को जो मास्टर सर्कुलर आया था उसमें चेंजेस किए गए हैं. तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट एंड टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क. सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें. रीड आउट द क्वेश्चन गाइस, रीड आउट द क्वेश्चन. शायद मैं इसकी ऑप्शंस देना भूल गया, एक सेकंड. By the time you read out the question, I'll introduce the options in a while. ओके, चलो तो देखते हैं. सर, एन एनपीओ रिमेन रजिस्टर्ड ऑन
social stock exchange without undertaking fundraising for an initial period of 2 years extended by 1 year. True. Relaxation from 75 to 50. That is true. Social stock exchange is required to undertake due diligence before granting in principle in cases where minimum subscription is proposed at 50%, where minimum fundraising is proposed at 50%. क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है सर. Next is, in case of under subscription where at least 50% of the funds are raised, disclosure regarding the manner of raising balance funds is mandatory. बिल्कुल, अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन है तो उस केस में अगर आप ये कहते हो कि सर आई विल ट्राई वंस अगेन टू रेज मोर फंड्स, यू आर अलाउड. इफ नॉट देन यू वोंट बी अलाउड टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट. इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अचीव्ड, तो जो भी पैसा आया वो सारे का सारा पैसा अपने पास रखोगे? नहीं सर, वो सारा पैसा आपको वापस करना होगा, आप रिटेन नहीं कर सकते. तो आंसर बनना चाहिए 1 2 3 4, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है बी ऑप्शन. सही है बी ऑप्शन? Yes or no? No sir, B option is wrong. Why it is wrong? Sir, आपने यहां तक तो पढ़ा extended by 1 year, but only with approval of SEBI. ये कहां option? Answer is going to be A option. अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे. SEBI का एक MOU और है, वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद SEBI ने एक MOU साइन किया विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. विल डिस्कस दैट. देन इंडिया में सरप्राइजिंगली जो करेंसी सर्कुलेशन है दैट हैज इंक्रीज्ड, विल डिस्कस दैट एज वेल. तो लगभग 3 न्यूज है, आप एक बार पढ़ के आइएगा. इन तीनों न्यूज के जो क्वेश्चंस हैं आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास इन क्विक रिवीजन, और उस पूरी न्यूज को विद द हेल्प ऑफ दैट इंफोग्राफिक्स में समझा दूंगा ताकि ये न्यूज भी कवर हो जाए और आपको क्लियर भी हो जाए. ठीक है, तो ये तीनों न्यूज पढ़ के आइएगा. सर हाउ एनपीओज रिटर्न दिस? रिटर्न तो करना ही नहीं है ना सौरभ, रिटर्न तो करना ही नहीं है, वही तो बात है. इट्स अ डोनेशन, there is no need to return. तो 75% ऊपर सब्सक्रिप्शन हो गई, ऑलवेज अंडर राइटर ऑब्लिगेटेड नहीं होगा टू कीप एटलीस्ट 90%. नहीं बेटा, अंडर राइटर ऑब्लिगेशन तो आजकल नॉर्मल कंपनीज के लिए खत्म हो गई. आप तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोल रहे हो, तो बिल्कुल ही गलत है. अरे अक्षत शर्मा, क्या नाम है? अक्षता या अक्षत शर्मा. कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कब क्या किया है. पेपर क्लियर करो, इंटरव्यू में जब जाओगे तब मैं पूरी तैयारी करा दूंगा कि इंटरव्यूअर के सामने क्या बात करनी है. आपने कम से कम 10 बार यही मैसेज लिख दिया जैसे आपकी कल इंटरव्यू होने वाली है. पहले पढ़ लेते हैं भाई, फेज 1 फेज 2 क्लियर करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे. और इंटरव्यू में जिनके 6-6 7-7 साल का गैप था वो भी क्लियर कर चुके हैं. तो शायद आपका तो 2 साल का गैप ही मुझे दिख रहा है, बट इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी. Sir, he might be asking if it is under subscribe, how the funds will be returned. Funds will be returned. अच्छा, तो funds will be returned तो वही है ना, सेम प्रोसेस. लॉक इन है ना, इट्स एन एप्लीकेशन लॉक इन. वो लॉक इन तब तक नहीं हटेगा जब तक सब्सक्राइब्ड अमाउंट ना आ जाए. तो आपके अकाउंट में ही है पैसा ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं. और अगर एंड ऑफ द डे लगा कि यू कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द अमाउंट विल बी रिवर्स्ड. द अमाउंट विल रिवर्स, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट. Simple. Is it clear? So can companies invest in CSR obligated in NPO through SSE? ये अच्छा क्वेश्चन है यार. ये क्वेश्चन नोट करो कि सर क्या कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन. This is the question. Very good question. True expense. This is a question for your homework, guys. Check it out. Give me the answers in the comment section. I'll start my next class from this topic only. Okay, Saurabh, I'll do that. Sir, can companies invest? Done. ठीक है जी. I hope सब clear है. Don't forget to hit the like button before leaving. Don't forget to share this session with your friends so that more and more students, they are aware that yes, the session is live and yes, we are learning a lot with respect to our upcoming RBI Grade B examination. Thank you so much. We'll catch you soon. Bye bye. Take care.